Hello everyone, welcome back to the channel. So today's lecture is on transpiration and translocation in plants. These are two very important physiological processes that help plants transport their water, minerals and food. So before proceeding towards the video, I just want to request, do please like, comment, share and subscribe to my channel. So let's get started. Okay, so first and foremost, we are going to discuss about a brief introduction of both the processes. Transport processes in plants. See, plants are stationary organisms, we all know, right? They stand at one place only, they do not have the potential to move. Yet they continuously transport water, minerals, and food throughout their body for the maintenance of their plant body. Unlike animals, plants do not have a heart or circulatory system. Instead, they depend on other tissues such as phloem and xylem for the transportation of water and food into the plant body. Two major important processes that helps plant doing this process are transpiration, which deals with the movement of water in the plant, and translocation, which deals with the movement of food in the plant. Okay, that these are the two topics that we are going to discuss today. So transpiration, अगर आप definition समझोगे तो transpiration मतलब होता है, if you go by the definition, it means that loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant. प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है, स्पेशली लीव्स जो होते हैं, जहाँ में पोर्स होते हैं, वहाँ उसके थ्रू वाटर जो है, वाटर वेपर बन के चला जाए, वाटर वेपर बन के निकल जाए और वो लूज हो जाए प्लांट से, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. Now most of this water loss occurs through tiny openings, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं. आपको पता होगा स्टोमेटा क्या होता है. So these are tiny openings जो कि leaves जो होती है उसके lower surface पे, lower end पे पाई जाती है. तो वो जो स्टोमेटा होता है उसके थ्रू वाटर लॉस जो है वो अकर होता है, एंड दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. ठीक है ना. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन. ठीक है, क्या क्या टाइप्स हैं ट्रांसपिरेशन की. फर्स्ट इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, सेकेंड इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड थर्ड इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की अगर हम बात करें तो ये स्टोमेटा के थ्रू होता है, इट्स वेरी क्लियर. ठीक है, एंड 90 to 95% जो वाटर लॉस होता है इन द प्लांट बॉडी वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से होता है. क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन की अगर हम बात करें तो लीव्स का जो क्यूटिकल वाला पार्ट होता है, लीव्स के जो क्यूटिकल्स होते हैं, वहां से जब पानी लॉस होता है, जब वहां से वाटर रिलीज होता है, वाटर वेपर बन के उड़ता है, उसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है जो लेंटिसेल्स से जो वुडी स्टेम्स होते हैं, स्टेम्स जो वुडी होते हैं, वहां पर जब लेंटिक सेल्स होते हैं, लेंटिकल्स और लेंटिसेल्स व्हाटएवर, सो लेंटिसेल्स जो होते हैं वहां से जब ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर रिलीज होता है, तो उसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. नाउ स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या होता है, you'll study that first. See, स्टोमेटा के अंदर हर स्टोमा के अंदर एक स्टोमेटल पोर होता है. ठीक है, स्मॉल होल्स जैसे हम पोर बोलते हैं, और दो गार्ड सेल्स होते हैं. गार्ड सेल का काम होता है टू रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, शेप चेंज करके. तो इट चेंजेस द शेप ऑफ द स्टोमेटा जब भी उसको ओपन करना होता है, इट अगेन चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा जब भी उसे क्लोज करना होता है. ये जो मैकेनिज्म है ट्रांसपिरेशन और गैस एक्सचेंज के रेट को कंट्रोल करता है, बिकॉज अगर स्टोमेटा क्लोज नहीं होगा तो वो वाटर रिलीज होता रहेगा, और ओपन नहीं होगा तो वाटर रिलीज होना चालू नहीं होगा. सो टू मेंटेन द एफिकेसी ऑफ द प्रोसेस, टू मेंटेन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, टू मेंटेन द रेट ऑफ गैस एक्सचेंज, these guard cells are very important for the functioning, for the efficient functioning of stomata. Okay, now what is the mechanism of stomatal opening. हमने समझा कि भाई stomatal opening होती है and closing होती है, and that's how plants stomata deals with the process. But how does it happen? See, अगर हम डे टाइम की बात करें, इट इज़ डिफरेंट एट डे टाइम एंड इट इज़ डिफरेंट एट द नाइट टाइम एज वेल. अगर हम डे टाइम की बात करें तो पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो गार्ड सेल्स में एंटर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम आयन विल एंटर द गार्ड सेल्स. ठीक है,
जैसे ही पोटेशियम आयन गार्ड सेल में एंटर करेंगे तो वाटर एंटर करेगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। ऑस्मोसिस अगर आपको पता हो व्हाट इज ऑस्मोसिस, तो उस ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर जो है अब ये करेगा, एंटर करेगा इनटू द प्लांट। So osmosis is nothing but the passive movement of solvent, usually water molecules जैसे हम बोलते हैं, across a selectively permeable membrane. तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में जब सॉल्वेंट यूजुअली वाटर मॉलिक्यूल्स का जब मूवमेंट होता है हाई एरिया से लोअर एरिया की तरफ, उसको हम या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ या हायर सॉल्यूट से लोअर सॉल्यूट की तरफ, यू कैन अंडरस्टैंड इट इन एनी वे, इट इज उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस ना। ऑस्मोसिस के बिकॉज के प्लस आयन अंदर गए तो के प्लस आयन गार्ड सेल्स के अंदर जाते हैं, तो वाटर भी गार्ड सेल्स के अंदर जाते हैं बिकॉज ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन इन दी गार्ड सेल्स। वाटर अंदर गया ना, गार्ड सेल्स जो है वो टर्जिड हो जाते हैं, वाटर के जाने की वजह से वो टर्जिड हो जाते हैं और स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन हो जाते हैं। नाइट के टाइम पे क्या होता है, पोटेशियम आयन वापस से बाहर चले जाते हैं, दे मूव आउट, वो बाहर जाते हैं तो वाटर भी बाहर चला जाता है अगेन by the process of osmosis, and now guard cells become flaccid। अब guard cells जो है वो flaccid हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाता है। so that is how the entry of iron, potassium ion regulate the opening and closing of guard cells. Now, what are the factors that affects transpiration? Light is first factor, as I said कि day time में क्या होता है, night time पे क्या होता है, मैंने आपको बताया। So the difference between daytime and night time is light basically. So light is a major factor which regulates the process. Second is temperature. Temperature is also important. Optimum temperature होना चाहिए. So that is also important. Humidity भी कहीं ना कहीं impact करती है on the process. Wind भी इम्पैक्ट करती है, एंड लीफ का जो एरिया है वो कितना है वो भी इम्पैक्ट करता है, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट, क्योंकि देखो सर्टेन परसेंटेज ऑफ वाटर लूज करना है प्लांट को, एंड प्लांट विल लूज दैट वाटर। नाउ इट डिपेंड्स ऑन दी सरफेस एरिया ऑफ द लीफ एज वेल, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने जल्दी पानी जो है वो लूज हो पाएगा। सो द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर। जैसे लाइट की मैंने आपको बात करी, तो लाइट जो है it increases the transcription process। जब भी डे टाइम रहता है तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है, तो लाइट इज एन इंक्रीजिंग फैक्टर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर। हाई टेम्परेचर की जो मैंने बात की, टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर हाई हो तो वो इवेपोरेशन को बढ़ा देता है। आपने देखा होगा गर्मी के टाइम पे वाटर बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि उस टाइम पे, तो टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। लो ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस ट्रांसपिरेशन। ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो इट इंक्रीजेस ट्रांसपिरेशन। ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वाटर कंटेंट ज़्यादा है एनवायरनमेंट में, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा वाटर वेपर नहीं बनता है, बट इफ़ ह्यूमिडिटी कम है तो ट्रांसक्रिप्शन रेट इंक्रीज होता है। विंड जो है इट रिमूव्स वाटर वेपर फ्रॉम लीफ सरफेस। जो लीफ का जो सरफेस होता है ना, लीफ का जो एरिया होता है वहाँ से विंड जो है वो वाटर वेपर को रिमूव करती है, तो अगेन इट इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। एंड लार्जर लीफ एरिया, एज आई सेड, इट रिजल्ट्स इन हायर ट्रांसपिरेशन रेट, ठीक है। Now what is the significance of transpiration? Transpiration होता क्यों है? What is the need of water loss from the plants? ठीक है, see, ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस करता है। ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन वी अंडरस्टैंड इट बाय द लॉस, द परसेंटेज ऑफ लॉस्ट वाटर from the plant. Now it is important in the plant because it produces a cooling effect। जब evaporation होता है तो प्लांट के अंदर एक coolness आती है, एक cooling effect वो provide करता है प्लांट को। It also helps in ascent of sap। एसेंट ऑफ सेप में वो मदद करता है, मिनरल ट्रांसपोर्ट में वो मदद करता है। अभी पानी लूज हो रहा है तो जितना भी मिनरल जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बिकॉज रूट ही है जो सॉइल से वाटर को ले पाती है, इनटेक कर पाती है, एंड इट ऑल्सो मेंटेन्स द सेल टर्जिडिटी, इट कीप्स द प्लांट in the upright condition, in the good condition. So that is why this is important. Now there is this one terminology which I have used in this topic, ascent of sap। ascent of sap मतलब क्या होता है, जो see, अगर आप
आपको ये कॉन्सेप्ट बेसिकली पता होना चाहिए, बट आई जस्ट लेट यू नो। पानी जो है वो अपवर्ड मूवमेंट में होता है हमेशा, एंड फूड जो है वो हमेशा डाउनवर्ड मूवमेंट में होता है, एंड हैज़ अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन टू इट। बिकॉज जो भी पानी है वो रूट्स में आता है सॉइल से, ठीक है, रूट्स इनटेक करती हैं। सो रूट्स आर एट द बेस ऑफ द प्लांट, एंड नाउ प्लांट रूट्स हैव टू सप्लाई द वाटर टू द एंटायर प्लांट। सो टू इन ऑर्डर टू डू दैट, वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में अपोजिट द ग्रेविटी मूव करता है फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट, लीव्स, stems, flowers, which occurs mainly through the xylem tissue, ठीक है। Xylem is the tissue which deals with the transpiration process, and phloem is the tissue which deals with the translocation process, ठीक है। Now there are different forces, cohesion, adhesion, cohesion यानी कि sticking together, adhesion यानी कि sticking to xylem walls, which also like take account in the process, but we are not going to deviate from the process. If you want a separate detailed presentation on each of these topics, please do let me know. I'll make entire video on these topics individually. So that was about transpiration, ठीक है। अब हम ट्रांसलोकेशन पे आते हैं। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? सी, ट्रांसलोकेशन फूड मटेरियल का मूवमेंट प्लांट के अंदर ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। सो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, जिसमें शुगर्स हैं, शुगर्स आते हैं मेनली, जो कि लीव्स से सारे या दूसरे प्लांट में होते हैं, मतलब ट्रांसफर होते हैं। लीव्स से क्यों हो रहा है? बिकॉज लीव्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड, ठीक है। तो वो फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम लीव्स का होता है। ये जो प्रोसेस है फ्लोएम टिश्यू की मदद से होता है, एंड इट कैन बी बाय डायरेक्शनल डिपेंडिंग ऑन द सोर्स एंड सिंक। क्या सोर्स है फूड का? लीफ से जा रहा है तो इट विल गो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, एंड इफ इट इज कमिंग फ्रॉम रूट इट विल कम फ्रॉम डाउनवर्ड टू upward. Now what is the structure of seeds? आपका जो वाटर वाला जो प्रोसेस है, इट इज ओनली वन डायरेक्शनल, and this process is bidirectional. Translocation is bidirectional. Now हम फ्लोएम का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। सी, फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर होता है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अंदर सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स मतलब क्या होता है? सीव ट्यूब एलिमेंट्स, सीव यानी कि छलनी जैसे एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, जो कि फूड को कंडक्ट करते हैं, फूड को होल्ड करते हैं। कंपेनियन सेल्स होते हैं विच हेल्प्स इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। लोड करना है, अनलोड करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, वो सब कितना ट्रांसपोर्ट करना है, वो लोडिंग एंड अनलोडिंग का काम कंपेनियन सेल्स का होता है। दे जस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोसेस। फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है जो कि स्टोरेज करता है सारा जितना भी फूड है, और विच इज नॉट येट इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड टू द प्लांट, तो वो उसको स्टोरेज करने का काम करता है। फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। दे सपोर्ट द प्लांट, दे सपोर्ट द मूवमेंट, दे सपोर्ट द स्टोरेज एंड एवरीथिंग। नाउ सोर्स एंड सिंक कॉन्सेप्ट क्या है? सो फूड moves from source to sink always. Food always goes from source to the sink. Source क्या होता है? Source are mature leaves जो कि शुगर को प्रोड्यूस करती है, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी करती है, जिससे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ सिंक is the roots, the fruits, the seeds, the growing birds, ये सब sink है, and food always goes from sources to the sink. So source is known as food producing part, and sink is known as food storing or consuming parts. And the direction of food movement changes plant needs, ठीक है, and according to the source and sink as well. Now mass flow hypothesis. Mass flow hypothesis was given by Munich. Mass flow hypothesis was given by Munch. So Ernst Munch, his name was Ernst Munch. So उन्होंने ट्रांसलोकेशन को एक्सप्लेन किया, इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। उनके थियोरी के हिसाब से फूड जो है वो एक प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू फ्लो करता है।
between source and the sink. एंड इस प्रोसेस को कैरी करने में प्लांट के अंदर फ्लोएम टिश्यू मदद करता है. फूड ऑलवेज गोज फ्रॉम सोर्स टू द सिंक, एंड टू कैरी दिस प्रोसेस फ्लोएम टिश्यूज सपोर्ट द process. Now, what are the steps in mass flow hypothesis? सी मास फ्लो हाइपोथेसिस में सबसे पहले एट द सोर्स जहाँ से फूड ट्रांसपोर्ट होना है वहाँ से शुगर्स आर एक्टिवली लोडेड इनटू सीव ट्यूब. सबसे पहले सीव ट्यूब्स में लोडिंग करने का काम कंपेनियन सेल्स का होता है. सीव ट्यूब्स में उसको लोड किया जाता है जो भी फूड को ट्रांसपोर्ट करना है. सो फूड इज लोडेड इनटू द सीव ट्यूब्स बाय कंपेनियन सेल्स. वाटर enters from xylem, creating high pressure. Xylem is the tissue which deals with the water flow. तो वाटर इनटेक होता है वहाँ पे जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है. नाउ आफ्टर दिस हाई प्रेशर एट द सिंक जो कि रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रोइंग बर्ड्स हैं, शुगर्स आर रिमूव्ड. तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है वहाँ पे because sugars are removed from there and food flows from higher to low pressure. So that is the simple concept of mass flow hypothesis which was explained by Ernst Munch. Now what are the factors which affects translocation? See, translocation is an energy dependent process completely. It slows down at low temperature. जब temperature काफ़ी कम होता है तो translocation बंद तो नहीं but definitely it slows down. And in the absence of oxygen, proving that living cells are involved. It's an energy dependent process. So जब भी टेम्परेचर लो होता है बहुत ज़्यादा या ऑक्सीजन की कमी होती है तो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस जो है इट स्लोज डाउन, एंड विच ऑल्सो प्रूव्स दैट living cells are involved in the process. Now a brief difference between the two processes. ट्रांसपिरेशन वाटर मूवमेंट से को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. Xylem is the tissue which deals with the process and it is mostly a passive process. Goes from downward to upward direction. Translocation में food movement होता है and it is an active process. It requires energy to be carried out in the plant. And phloem की वजह से होता है. Phloem is the tissue which deals with the process. What is the importance of these processes in plant life? See, both transpiration and translocation are very essential processes in plant life. उनके proper growth के लिए, proper nutrient distribution के लिए, and overall survival and productivity जो है plant की वो भी इनसे maintained रहती है. So to conclude, transcription helps in water transport, water movement and cooling, while translocation ensures food reaches every living cell in the plant. So together these processes maintain balance and life in plants. Okay, so if you found this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. We will meet in the next video. Also, if you have any particular topic of your choice to be explained by me, please do let me know below in the comment section. We will meet in the next video. Bye bye. Take care.